So we would be tackling this very topic, mastering academic vocabulary, which is an integral part of the subject, essentials of thesis writing MP-07. I hope you are able to see the slides. Now, let's come to the first slide and have a discussion. The importance of academic vocabulary. The two words, expressions, which are of great importance here are clarity and precision. When we use academic vocabulary, we bring in clarity and precision, which means accuracy. We also enhance scholarly writing to make it sure that the communication is clear, right? So these are the requirements of writing academically or academic writing. Coming to introduction to academic vocabulary, first of all, we should know how to define academic vocabulary. Academic vocabulary, it consists of words and phrases that are specifically used in academic writing and research context. Academic vocabulary वो पर्टिकुलर वर्ड्स और phrases का इस्तेमाल होता है जो स्पेसिफिकली प्रिसाइजली जो है डिजाइंड होते हैं एकेडमिक राइटिंग में और रिसर्च कंटेक्स्ट में, रिसर्च के सिनेरियो में जब हम रिसर्च राइटिंग कर रहे होते हैं. मास्टरी ऑफ दिस वोकैबुलरी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंगेजमेंट in scholarly discussions. Scholarly discussions means whenever we are talking as an academic, when we are writing as academic, when we are discussing something as a scholar. Now, what is its importance in scholarly writing? Using academic vocabulary enhances the professionalism. Our work becomes professional and we also build up credibility of our writing. What is the meaning of credibility of our writing? By credibility of the writing means we make people, and now these people are the academics, they are the researchers, they are the scholars. We make them believe in what we are writing, right? What are we writing? They should believe in our work. They should believe in the worth of our work. They should consider our work as academic, professional writing. And scholarly writing also helps us convey complex ideas very clearly, very persuasively. Persuasively means we are able to convey something with conviction. Now, this is very crucial in academic settings. Coming to the next point, clarity of communication. Effective academic vocabulary makes it sure that our ideas are communicated clearly, and also we allow our readers to understand intricate concepts. That is, concepts which are not very simple, which are not very straight. In fact, they are intricate. There are a lot of detailing involved. So we want our readers happen to be scholars and academics, to understand the intricate concepts without ambiguity. Without ambiguity means without any misunderstanding. This is essential in academic discourse. What is discourse? Discourse means a scholarly thought process, right? Academic discourse where precision is key. Precision means accuracy is key. Coming next, broader audience comprehension. A well-developed academic vocabulary can make complex ideas comprehensible. What is the meaning of comprehensible? Make it clear, understandable,
to a wider audience, bridging the gaps between specialized knowledge and public understanding. Now I want effective engagement. You all the 60 plus people who are there in the class, who have entered the classroom, right? Please go through this slide and let me share, let you share actually with me your understanding of it. Today's topic is academic vocabulary. What is the importance of academic vocabulary in writing our thesis, in writing our research paper? To put it briefly, साफ शब्दों में बोला जाए, एकेडमिक वोकैबुलरी हमारे काम में प्रोफेशनलिज्म लेके आती है, उसको एकेडमिक स्कॉलरली टच देती है, हमारे काम की क्रेडिबिलिटी, हमारे काम में लोगों का विश्वास बनता है। हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, जब हमने उसमें एकेडमिक वोकैबुलरी के शब्दों का इस्तेमाल किया होता है, तो पीपल बिलीव एंड अंडरस्टैंड इन आवर वर्क. So please go through the given slide and share. Have you understood? Have you understood? Please go through the slide and let me know. Introduction to academic vocabulary. First, definition क्या है? आपको मैं साफ हिंदी में बता देती हूँ, आपको पहले पता होना चाहिए academic vocabulary क्या बला का नाम है, academic vocabulary होती क्या है, फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्कॉलरली राइटिंग में, कैसे एकेडमिक वोकैबुलरी से क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन आती है, और ऑडियंस जो है हमारी, जो कि हमारे रीडर्स हैं, उनको हमारा काम जो है वो समझ आता है. I am just giving you few seconds more to go through this slide before we proceed further. I want active discussion in the classes. Whatever your queries are, please discuss them in the class. Don't send me personal message. At the moment also, I am at least teaching 600-700 scholars of essentials of thesis writing. मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 600-700 बच्चों का essentials of thesis writing के प्रश्नों का जवाब देना. क्लास में आप पूछो, 100 प्लस बच्चे अभी क्लास में हो, कुछ भी पूछो, आपका एक सवाल है वो 50 और लोगों का सवाल हो सकता है, तो उससे क्लैरिटी बनेगी. बाद में मैं 700 लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती. और मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि एसेंशियल्स ऑफ थीसिस राइटिंग मेरी एक क्लास है, उसके अलावा मेरे रेगुलर टाइम टेबल होता है एक. ये तो सैटरडे संडेज की क्लासेस हैं. I have many scholars whose PhD thesis as a supervisor I am guiding. So please don't send me 700 queries later on. You're most welcome to ask your queries in the classroom itself. Should we proceed further to the next slide? Key features of academic vocabulary. What are the key features of academic vocabulary? Academic vocabulary adds a formal touch. What is formal? Something which is professional, something which is credible, right? So it adds a formal touch to your writing. This involves avoiding slang, casual language, which is unprofessional, which is unacademic. For instance, rather than using a common English word do, we can use a academic vocabulary word conduct, which gives
a very formal approach to what we are saying. Coming next, specificity. Academic vocabulary is very specific, precise, right? Accurate. So, academic vocabulary requires the usage of terms that are specific to the discipline being discussed. By discipline, we mean the subject. For example, using the term hypothesis in research context is essential as it conveys a very precise and specific meaning. Similarly, academic vocabulary is also objective. It is free of all biases. The information which we are presenting through the usage of academic vocabulary, it is very neutral language. There is no personal bias. For example, if we are using the word data, right? The data suggests that is more objective approach. Whatever we are saying based on data. We are not saying based on our personal belief. So never use the vocabulary I believe. Okay? Instead of that, we are going to use the data suggest. This thesis studies because you are, one person who is responsible for what is being written in your thesis. Your thesis, your research paper is a product of many minds. आप जो कोई लिखते हो, आप 50 किताबें पढ़ के, 20-25 रिसर्च पेपर पढ़ के, आपसे पहले वो विषय पे जो शोध हो चुका है, जो रिसर्च हो चुका है, वो सब आपकी थिंकिंग को प्रभावित करता है. सो कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल मत करो, आई बिलीव, बिकॉज आपकी बिलीफ के पीछे एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है. बहुत ज्यादा थ्योरिस्ट है, बहुत ज्यादा किताबें हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर है, बहुत ज्यादा रिसर्चर्स का दिमाग है, आपके सुपरवाइजर का दिमाग है उसके पीछे. सो थीसिस में ये पर्सनल प्रोनाउंस नहीं यूज करने होते हैं, राइट? सो गो थ्रू दिस वेरी स्लाइड and share your understanding of it before we proceed further. The slide talks about the key features of academic vocabulary, how the academic vocabulary is formal, specific, accurate, precise, and is objective. The word objective has, very positive tone. By objective, we mean free of all personal beliefs, judgment, bias. Please go through this slide and show me, give me a thumbs up. Instead, you should speak out. In case you are muted because you disturbed the class, so we have taken this step of keeping you muted because you put your microphone on and you keep on chatting something with the people around you in your homes and you disturb our classes. So after spoiling many of our classes, we took this decision of keeping you muted. Actually, the classrooms, whether online or offline, should be full of discussion, participation. We can go in for that. We can keep you all unmuted. We can give you the control of your mics so that you participate in the talks and the discussion, so that later on you do not send me 700 messages. For that, you have to be very sincere and disciplined, which I'm sorry to say you are not. You merely put your class on and let the class keep on running, right?
बिकॉज आपको पता है मैडम का फोन नंबर है हमारे पास, मैडम का व्हाट्सएप है, उनको 50 मैसेज डाल देंगे, वो पूरा दिन उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ले ली है। सो बढ़िया यही होता है कि क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करें। 1 घंटे की हमारी क्लास होती है शनिवार की, इतवार की, उसमें बहुत अच्छे से चर्चा करें, डिस्कशन करें, चीजों को समझे। आप पीएचडी स्कॉलर हो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के, इसके बाद आप बहुत बड़ी, सबसे बड़ी डिग्री के मालिक बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। सो हमें अपनी व्यवहार कुशलता में वो सब कुछ लेके आना पड़ेगा। हमें अपना, हमें परिवर्तन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। स्टाइल ऑफ वर्किंग, style of thinking. We have to bring about a sea change. We are researchers. So let's proceed further to the next slide. Academic vocabulary and clarity. How academic vocabulary brings in clarity. First of all, academic vocabulary avoids ambiguity. What is ambiguity? Ambiguity means misunderstanding. Ambiguity means confusion. So we can always replace vague terms like thing. Thing is a common English word. It is not academic English. We can always replace such silly, vague, unacademic, informal expressions with specific words like phenomenon, concept. This phenomenon, this concept, this research, we should use such kind of expressions and not use vague expressions like thing. Second is, it provides precision. Like when we say the results confirm a strong correlation between X and Y. So we are using a precise language. What are the benefits of academic writing? Academic vocabulary allows a reader to understand your arguments without confusion, enhancing the professional level of your writing. Please go through this slide and let me know your understanding of it. I hope this slide is clear to you. I usually share the PPT with you, but even if there is some delay in sharing of the PPT, the video lectures, not exactly the video lectures, but the recorded lectures, they come to you in a day's time. Please listen to the recorded lectures, and the recorded lectures are provided to you in your WhatsApp by our scholar Weber. So you need to thank that scholar at least by giving a thumbs up, by liking, by commenting, because he was a scholar of many previous batches, but still he has taken the responsibility through his company to provide us a recorded version of our lectures. This all is done to help you understand the things in a better manner. Almost the entire course, essential of thesis writing, is in the form of recorded lectures. Day one, from the discussion of what is your course, your induction class, to the last lecture, right? So let's proceed further.
the role of academic vocabulary in precision, right? We will understand it through the expression. Let's pay attention to an example. The study was conducted to evaluate the efficacy of the treatment. Now, once we use such kind of expression by using academic vocabulary like conducted, evaluate, efficacy, treatment, we are trying to convey a clear objective and methodology. So this is how accuracy comes by the usage of academic vocabulary. Coming next, academic vocabulary also builds trust and credibility. When we use precise, accurate terms in academic writing, it reflects that there is a research behind the statement. So people, the academician, the researchers, the professionals, the scholars who go through our work, they believe in the credibility of our work. They cannot, simply ignore what we are saying. They believe in the worth of the research which has gone behind this expression. So readers, they are more likely to trust the findings that are articulated using specific and well-defined vocabulary. Academic vocabulary also, the context of it, the backdrop of it is very relevant. For example, whenever we use a vocab like variables instead of factors in a scientific study, so we are conveying a more accurate description, thereby improving the quality of our research. Please go through this slide. Give me a thumbs up before we proceed further. Accents or substance. Coming next, how to build an academic vocabulary. First suggestion, read peer-reviewed journals. Read the research papers from your discipline-specific journals. When you read some good research papers, you understand the usage of academic vocabulary, right? You are also exposed to the current research and discussion within your academic community, and you come face to face with the discipline specific academic vocabulary which is used in various contexts and various scenarios. You just, another suggestion is use a vocabulary journal. You can also maintain your own vocabulary journal by recording new academic words, their definitions, and their contextual example. This very method reinforces learning, and also it becomes a personalized resource for future reference, helping you to actively engage with new vocabulary. मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ. Building an academic vocabulary. How you can build academic vocabulary? पहले तो आप अपने पर्टिकुलर विषय के, थीम के, टॉपिक के हिसाब से जो जर्नल्स हैं उसमें से रिसर्च पेपर डाउनलोड करो. वो रिसर्च पेपर को 1 बार, 2 बार, 5 बार पढ़ो. उसमें आप academic vocabulary के used जो words हैं उनको अंडरलाइन करो. फिर अपना एक एकेडमिक जर्नल मेंटेन करो जिसमें वो पर्टिकुलर वर्ड्स की आप एक लिस्ट बनाओ,
उन जो पर्टिकुलर वर्ड्स के डेफिनेशन, पर्टिकुलर वर्ड्स के कंटेक्चुअल यूजेज, आप अपना एक पर्सनलाइज जर्नल बनाओ जिससे आप एकेडमिक वोकैबुलरी जो है उसका आपको ज्ञान और उसके ऊपर आपकी मास्टरी बने, ताकि आप वही भाषा का इस्तेमाल करें, वो पर्टिकुलर शब्दों का, शब्दावली का इस्तेमाल करें जब आप अपना थीसिस राइटिंग करें और जब आप अपने रिसर्च पेपर लिखें या कोई भी और एकेडमिक राइटिंग करें। राइट, एंगेज इन राइटिंग एक्सरसाइजेस, फिर आप खुद भी छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख के उसमें एकेडमिक वर्ड्स का यूजेज करके जितनी आप राइटिंग करोगे, जितना आप एप्लीकेशन करोगे न्यू वोकैबुलरी का, उतने ही वो शब्द आपके बन जाएंगे और आपको जो है वो बहुत मदद करेंगे, वो आपके एक्टिव वोकैबुलरी में रहेंगे और आप उनका इस्तेमाल अपनी राइटिंग में बहुत ही फ्रीली कर पाओगे। नाउ कमिंग नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ एकेडमिक वोकैबुलरी। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ एकेडमिक वोकैबुलरी? कंटेंट स्पेसिफिक टर्म्स, ये स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी होती है जो स्पेसिफिक एकेडमिक फील्ड्स में यूज होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ग्रीन प्लांट्स हैं, इको क्रिटिसिज्म, ऐसे कुछ कुछ वोकैबुलरी है जो कि हम जो है बायोलॉजिकल साइंसेस में यूज कर सकते हैं। इको क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमें ये पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग रहनी बहुत जरूरी है कंटेंट और वोकैबुलरी ऑफ अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का यहाँ पे मतलब वो वाला डिसिप्लिन नहीं है जिसको हम बोलते हैं कि लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, स्टे इन डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट और स्टडी एरिया। जनरल एकेडमिक वर्ड्स जो होते हैं जैसे एनालाइज है, थ्योरेटिकल है, कंसेप्ट है, आइडियाज है, फॉस्टरिंग है, ये सारे जो जनरल एकेडमिक वोकैबुलरी के वर्ड्स है, इनकी भी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से और इनका यूजेज का आप इस्तेमाल करना सीख सकते हो। ठीक है, और ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, जब आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ बढ़ते हो तो वो जो ट्रांजिशन है ना वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, सीमलेस होना चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस होते हैं जैसे हाउएवर, देयरफॉर, हेंसफोर्थ, डिस्पाइट, ये हमारे ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस होते हैं। सो इनकी भी जानकारी हमें कर लेनी चाहिए। कमिंग नेक्स्ट इज 50 essential academic words. Analyze for example, उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? This paper will analyze the key factors influencing economic growth. Another word is synthesize. The study synthesizes data from multiple sources. Third word is evaluate. The model was evaluated for its accuracy. Interpret. The results can be interpreted as evidence. Significant. Findings have significant. So ये जो शब्द हैं, अगर मैं ये 5 शब्दों की बात करूं तो इनका जो यूजेज है बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही एक्यूरेट है। पेपर विल एनालाइज, पेपर एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा, साइंटिफिक स्टडी करेगा की फैक्टर्स की। डाटा जो है सिंथेसाइज, वी आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। इवैल्यूएट करना, हम किसी भी चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं वो चीज को। इंटरप्रेट है, कोई भी कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। सिग्निफिकेंट होता है ऑफ अ एप्रिशिएबल गुड एक्सटेंट, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, उस संदर्भ में, उस बैकग्राउंड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एकेडमिक वर्ड्स इन कंटेक्स्ट, जैसे अगर हम इंट्रोडक्शन
तो उसमें हम क्या एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन हमारे रिसर्च पेपर का, हमारे चैप्टर का, हमारे थीसिस का। दिस पेपर एम्स टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। एक्सप्लोर एकेडमिक वोकैबुलरी है, इम्पैक्ट एकेडमिक वोकैबुलरी है। सो वी कैन अंडरस्टैंड how the impact of climate change on agriculture is going to be. It's going to affect crop production, food security, agricultural sustainability. मेथडोलॉजी में हम क्या भाषा का इस्तेमाल करेंगे? द डाटा कलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स इंटरव्यूज एंड सर्वेज, राइट? सो और भी आगे हम कोई और भाषावली का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेके चले, ensures that diverse perspectives are captured. Diverse perspective मतलब भिन्न भिन्न जो है दृष्टिकोण। रिजल्ट्स में हम क्या यूज कर सकते हैं? द एनालिसिस इंडिकेट्स अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। सो ये आज मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, और आज के लिए बस मैं ये 10 स्लाइड्स ही लेना चाहती हूँ ताकि आपको चीजों की क्लैरिटी बने रहे। सो अगेन आई रिक्वेस्ट you give me in written in the groups, various groups you are, that you would like to participate, and you will not leave your mics open, and let all your family discussion come to our classroom. You will only keep your, sorry, unmuted. You will only unmute when you want to discuss something, and you are open to all the discussions. Let's participate. The mics have to be kept unmuted to participate in the scholarly discussion, and not for your family commentary to reach us. ठीक है? आप हम अच्छे से ध्यान दो, आपको ये पर्टिकुलर पीपीटी शेयर हो जाएगी। आज का जो हमारा विषय था वो था एकेडमिक वोकैबुलरी। एकेडमिक वोकैबुलरी क्या है, ये पीपीटी को आप सुनना, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास पहुंच जाएगा। एकेडमिक वोकैबुलरी के यूजेज के क्या फायदे हैं, एकेडमिक वोकैबुलरी हमारी रिसर्च राइटिंग में, थीसिस राइटिंग में कितनी जरूरी है। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Whatever is conveyed to you, it's conveyed to you for your betterment. It's part of the training grooming process. Thank you so much.